another episode of Health Talks with Experts. एंड आज का जो एक्सपर्ट है दैट इज डॉक्टर ग्रीष्मा एंड आज हम उनसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड हम सब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इस टॉपिक में एंड दैट इज वेट लॉस. सो हाय, हाउ आर यू? Hi Navmi, it's nice to be with you again on this show. How are you? I'm fine. थैंक यू, इवन आई एम गुड. एंड आज हमें बहुत ही अमेजिंग एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है डॉक्टर ग्रीष्मा से अबाउट वेट लॉस. सो मुझे लगता है बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए क्योंकि हर कोई इस टॉपिक को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है. सो डॉक्टर ग्रीष्मा, इससे पहले कि मैं आपसे कोई और क्वेश्चंस पूछूं, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज वेट गेन होता किस वजह से? एंड यूजुअली हम देखते हैं कि मतलब देयर आर मतलब इट हैज बिकम वेरी कॉमन नाउअडेज. अब यूजुअली हर किसी का वेट गेन ही हो रहा है. सो व्हाट इज द रीजन, मतलब व्हाट आर द रीजंस बेसिकली? Actually, you're very right, Navmi. हर किसी का weight gain ही हो रहा है, especially इस lockdown period में. So इसका main reason अगर हम देखा जाए तो all the reasons will get into 2 or 3 boxes in a nutshell. So first thing is intake of a greater amount of calories. Intake of huge calories is a reason. So for example, अगर हम modern terms में बताया जाए, and I hope everybody would understand this, because a man would need about 1700 to 2000 calorie per day and maybe maximum up to 2500 calories. And a woman needs about 1200 to 1600 calories per day. And if the calorie intake is higher than this, for example, अगर ये इतना ही खाना है and हम ज़्यादा खा रहे हैं, like in a blunt word अगर बताना चाहें तो, so that becomes directly a reason for weight gain. क्योंकि हम जो खा रहे हैं, even if it is not fat, even हम carbs खा रहे हैं या जो protein ज़्यादा ही खा रहे हैं और जो भी micronutrients है उसका हम ज़्यादा ले रहे हैं तो it will always get stored in your body. And mostly even if the carbohydrate is taken in excess, ये कैसे store होगा? ये fat के रूप में ही store होगा, so that the body ये समझ लेगी कि हम when there is a deficit, the body can use it. So intake of a higher amount of calories is directly one reason for weight loss. Now, intake of calories. Now, the second reason would be directly not doing exercise or not burning that calories that you have taken. So that is also another important reason. अगर diet and exercise proper है तो then ये weight gain के बारे में nobody would have to listen, or unless there are other problems like hormonal imbalance involving there are so many women with PCOD and PCOS, they are battling with weight loss even in spite of doing a lot of things. So hormonal imbalance becomes one of the main reasons. Hormonal imbalance में एक और चीज है, and women, men, most of them suffer from it, that is hypothyroidism. So अगर किसी को hypothyroidism है, उनका weight it will keep on increasing, so उसके लिए कुछ दवाइयाँ या treatment लेना पड़ता है. So all these are the things जो primarily it will add to weight gain. Right. So मैंने एक चीज देखी डॉक्टर ग्रीष्मा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बहुत ट्राई करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, अलग अलग डाइट्स पे जाते हैं सो दैट हम अपना वेट लूज कर सके. बट काफी बार हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं जो हम चाहते हैं, और अगर रिजल्ट्स मिल गए, फिर हमारा रूटीन थोड़ा बिगड़ गया तो वापस से हम वेट गेन करने लग जाते हैं. सो व्हाट आर द मिथ्स जो इस वेट लॉस प्रोग्राम से एसोसिएटेड है? So, लोगों को बहुत सारे ideas है weight loss के बारे में. So, if you even see Instagram handles of people, or if you even see people around you, एक लोगों को एक संदेश है weight loss के ऊपर. So, one thing is that people do a lot of crash diets. When we say that आप excess calorie ले रहे हो, immediately what they tend to do is go on a crash diet, or they go on an extreme fasting method, or you want to lose weight in 7 days, or even if you type in Google lose weight, वो आगे ये recommendation दिखेगा कि how to lose weight in 7 days, in 14 days, etc. So all these techniques are not sustainable weight loss. Now another thing that
people do is that they take a lot of weight loss drinks instead of taking nutritious food. So they kind of swap nutritious food for some weight loss drinks jo which the market claims or the company claims that अगर आप ये पियोगे तो इतने kilos कम होगा and all that. शायद वो कम भी होगा, but at the stake of their nutrition. So आगे क्या problems आएगा, there'll be hair fall, or when they stop taking that drink वो weight वापस आ जाता है, or there might be any other condition associated with malnutrition that person might suffer from. Weakness हो जाता है. Hair fall is something that everybody complains of after weight loss. Anemia is something that everybody complains of after weight loss. So this is a result of certain unsustainable weight loss methods that they have tried. And another thing that people do is intake of weight loss pills, slimming juices. जो fresh juices है उनके घर पे ही बनते हैं, but still it does not give all the nutrition that they need. Then people also use certain things like slimming belts hai, slimming oils, whatnot. You might also have heard all these things कि मतलब मेरे पास लोग आते हैं कि जो hardcore method करते हैं, so they go on a juice diet for like 20 days, 21 days. They just go on a boiled vegetables diet or a fruit diet maybe, which does not work for a long run. So weight loss should be something sustainable. Yeah. Otherwise it wouldn't work. Okay. एब्सोल्युटली, मतलब ये इवन आई हैव सीन इट कि कैसे लोग मतलब कुछ भी कर लेंगे, बट मतलब जब उन्होंने डिसाइड कर लिया दैट वी हैव टू लूज द वेट, वी हैव टू लूज दोज एक्स्ट्रा किलोज, तो ऑटोमेटिकली वो होता है. सो यहाँ पे डॉक्टर ग्रीष्मा, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि बहुत बार हम लोग ऐसी गलती कर लेते हैं, ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी डैमेज हो जाती है, हमारी बॉडी के लिए वो बहुत हार्मफुल हो जाता है. सो जो भी लोग वेट लूज करना चाहते हैं या आजकल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, ये बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड में है कि हमें क्योंकि सबने कुछ ना कुछ किलोज पुट ऑन कर लिया है, तो वो ऐसे कौन से डूज एंड डोंट्स हैं दैट यू वांट टू गिव टू पीपल जो हमें देख रहे हैं एंड जो अभी वेट लॉस करने के प्रोग्राम में इन्वॉल्व है या अपना वेट लॉस कर रहे हैं? तो एक सस्टेनेबल वेट लॉस मेथड फॉलो करना चाहिए, एंड ये वाला मेथड किसी किसी को पर्सनलाइज्ड हो सकता है, कस्टमाइज्ड हो सकता है. some people might be having their own trainers and coach who might train them on this, but weight loss is equal to diet and lifestyle अगर बहुत simply बताना चाहें तो. So diet कैसे हो जाना चाहिए? It should be with all the nutrition, it should be with right amount of fat, right amount of protein, right amount of carbohydrates, and also with a lifestyle that is working around it. So lifestyle में क्या आएगा? Stress management skills comes under lifestyle, because stress might also lead to weight gain for a lot of people, and also their drinking habits, their smoking habits, everything comes under lifestyle, and even their exercise habits comes under lifestyle. Abhi exercise mein a lot of people have this kind of exercise कि मुझे आज 3000 step walk करना है और 5000 step walk करना है और आज मैं swimming करूँगी. So something that is sustainable and it is also included along with their lifestyle, something that they enjoy. So this would be a sustainable weight loss method for any person. And shortcut methods like crash diets or slimming drinks or slimming belts, these would always damage your body. So do's and don'ts यही होता है कि don't go for a shortcut method, and go for that method that is sustainable and would take you for a long run in a healthy way. Another thing that people do is take diet for at least 4 or 5 days, and जो 6th day और 7th day है पूरा junk आते हैं and पूरा sugary drinks, cocktails which contains a lot of sugar syrup and all that वो लेते हैं. So that is also certain things that one has to really keep a track on. Artificial sugar is something that one has to keep a track on की, because sugar candies, chewing gums वो छोटा छोटा दिखता है, but when you really take it, the calories that they contain is so high, and it is too high on the liver to even digest and metabolize it. So
these are certain things that a person should keep in mind. And if you ask about an Ayurvedic method to weight loss, Ayurveda always tells that, you know, diet and lifestyle comes first in Ayurveda. The next is medicine, agar if it is very much required. राइट ओके सो आई हैव सीन कि काफ़ी बार जब हम वेट लूज करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मना कर दिया जाता है कि ये तो नहीं खाना है, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके लिए कहा जाता है ये तो खाना चाहिए क्योंकि इससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा या आपके वेट लूज करने के प्रोग्राम में ये आपको हेल्प करेगा. सो आर देयर एनी फूड टिप्स जो आप देना चाहें कि कुछ ऐसे फूड्स हैं जो आप इंक्लूड करें अपनी रेगुलर डाइट में और कुछ ऐसे फूड्स जो बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए अगर वेट को लूज करना है तो? So मैं ये बताना चाहूंगी that everybody has something called as the genetic memory, you know, and that genetic memory knows that जो food or drinks which was taken by your parents or your grandparents which runs in your family, be it some dessert or be it some you know, fried item which can be metabolized and digested better than these avocados or whatever new things are coming in the market. So मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये बिल्कुल नहीं खाना है, ये खाना है, but ज्यादातर हमें ये include करना है that the diet that was running in our family. For example, for an Indian household, we are you know, बचपन से ही हमारा ये होता है कि राइस खा लो, व्हीट खा लो. We used to take a lot of millets like रागी है and you know, बाजरा, जावर, बार्ले. So इसमें राइस, व्हीट के अलावा बाकी जितने भी आइटम्स है, it contains a lot of complex carbohydrates in you know, modern terms. So that is something that everybody can take because it is filling, it contains a lot of fiber, and it contains all the nutrients together. And also you know, looking at the sides of what you can eat, pulses hai, cereals hai, fruits है, vegetables है, which are fresh, local and seasonal. So मैं कभी ऐसे नहीं बोलूंगी कि जो हमारे देश में नहीं है वो avocado लेके खाओ, or you know, have some you know, have some grain that is imported from Brazil or Australia or something. Eat local and eat fresh and eat seasonal. So that puts you to a very broad and very delicious I mean a table ki you can have ये हम खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते. Right. And also मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रही हूँ कि like you should never eat sweets or you should never eat जो घर पे बना हुआ desserts है, नहीं. So you know, our festivals and the way our festivals are, the way the tradition is, the way the culture is, it's around these sweets and all these bhajiyas and gujiyas and all those stuff. So उसके लिए एक टाइम है, उस मतलब उस टाइम पे खाना है, and I would say कि जरूर खाना है because there are certain you know, elements to it, to the taste and the pomp and show around it. But yeah, there are certain things, you know, certain junk food है, certain chat items है, वो भी आप कभी कभी ले सकते हो even with a weight loss diet. So weight loss diet के लिए don't keep a chat you know, like a cheat meal weekend. You can keep a cheat meal, like only one meal you cheat, and maybe you can have 1 or 2 pieces of pizza and not feel guilty about it. That is very important when you are in this weight loss journey. So you know, that is about it. Other thing is occasionally and moderately you know, when you consume a little bit extra calories, it will not going to cause higher problem. But when this becomes a daily routine ki main daily you know, I'll have this papad every day, or I will have this you know, fried food every day, chicken nuggets every day, that is obviously going to put some extra calories. Or if you are taking those extra calories, make sure that you burn it. That is very important. And another things that जो हमें पता भी नहीं है कि हम इतना खा रहे हैं, but already we have consumed a lot of calories. That is something like cola है, और जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स है, शुगरी ड्रिंक्स है, उसमें बहुत सारे जो शुगर कंटेंट है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू एड अप टू कैलोरीज. एंड कहीं लोगों को देयर इज अ प्रैक्टिस, people chewing gums, candies,
that also contains a lot of sugar. So आपको पता भी नहीं है कि आप ये ले रहे हो, but it is causing weight gain and Weight a gain. lot of problems. Right. And also, taking a piece of fruit or a dry fruit helps instead of chewing gum, instead of candies and sweet. Maybe that is something that you can go to. Right. एंड अगर आपको बहुत कुछ मन है कि अभी मेरे को फ्राइड पोटैटोस या चिप्स खाना ही खाना है, देन मे बी यू कैन ट्राई अ बेक्ड वर्जन, बिकॉज नाउ द कुकिंग हैज बीन इतने सारे वेराइटीज है that you can always go for an alternative versions. And handful of nuts ले सकते हैं जो peanuts है and almonds and cashews, lot of nuts that comes according to the seasons. And another thing that I was talking about sugar. So instead of jo artificial sweetener or artificial sugar, you can take natural sweeteners like palm sugar is there, jaggery is there, and there are certain type of natural sugar according to the state and region wise. So that is something that one can go to. एंड हमारा एक आदत है कि हम बिस्किट्स खाते हैं, कुकीज खाते हैं चाय के साथ और कॉफी के साथ. वी डोंट इवन नो कि उसमें इतने कैलोरीज है. सो one can switch that maida biscuit to a ragi biscuit or a multi-grain biscuit, or maybe homemade atta biscuit, something like that. So it's better if one is eating mindfully. Mindful eating बोलते हैं उसको. So what is mindful eating is, you know what you're eating, you know what is on your plate, you know the ingredients of it, and you know what it does to your body. Be it pizza, be it burger, be it a piece of cheese or whatever you really like. But mindful eating बहुत जरूरी है. Right. सो ये तो थी फूड की बात कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए अगर हम एक वेट लॉस की जर्नी पे है. सो नाउ आई वांट टू आस्क अबाउट फ्यू एक्सरसाइजेस, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जितना हमारा डाइट इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट उस फिजिकल एक्टिविटी भी है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं. तो एनी एक्सरसाइजेस और एनी योगा पोजेस दैट यू सजेस्ट कि ये करना हमारे वेट लॉस की जर्नी पे या वेट लॉस के इस पूरे प्रोग्राम में बहुत हेल्पफुल होगा? या सो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एक्सरसाइज बहुत सारे तरह के एक्सरसाइज होता है. So there is something called HIIT these days. There is something called cardio. Swimming is an exercise. There are a lot of exercise that someone can do in their home as well. So talking about exercise, yoga comes to my mind first, because yoga is something which really balances a lot of elements in a person. So Surya Namaskar hai jo bahut sare helpful hai. So one can at least start by doing 3 Surya Namaskar per day or 5. फिर उसको one can increase it according to his or her strength and stamina and how one can do the pose perfectly. And और बहुत सारे poses है जैसे कि धनुरासन, which is the bow pose. That is also helpful in reducing the tummy region, toning the thigh muscles, toning the arms and all that. And especially for people who have hormonal imbalance, उनके लिए धनुरासन, चक्की चलनासन है जो हम in the olden India we used to do that chakki. So chakki chalanasan karke, there is a pose which decreases the abdominal fat, and there is bhujangasan which will tone the chest muscles or muscles of the neck, etc. And butterfly pose here, which is the titilyasan. It is very helpful for someone who is battling with PCOD, PCOS, fertility, and जिनका abdominal fat ज़्यादा है, thighs में fat deposition है, उनके लिए butterfly pose is very effective. Then there is something called chakrasan. Chakrasan also helps the total core, back and the abdomen region, thighs and calf muscles. So all these poses helps. And HIIT I was talking about, so a high intensity interval training. So it is gaining popularity, and it burns it helps you burning a lot of calories in a very short span of time. You sweat a lot and sort of you can really feel that release, and after that एक stiffness जो है body में वो चला जाता है.
all those things really helps. And now people might be telling कि मेरे को knee problems है, मेरे को दर्द हो जाता है, I can't do this, और मैं तो मतलब walk ही नहीं कर पा रही हूँ, why are you asking me to do all these things? उन लोगों के लिए at least you know, maybe cycling or maybe a short walk or maybe jogging or even swimming helps. So at least you know, इतने सारे options है, you can go for anything that is that you can do for a long run, and that will surely help in fat loss. So now we know कि वेट गेन कैसे होता है एंड वेट लॉस के अराउंड जो भी मिथ्स है, जैसे कि क्रैश डाइट करना है, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, स्लिम बेल्ट, इन्हें हमें किस तरीके से अवॉइड करना है, और ऐसे कौन से फूड्स हैं जिन्हें हमें इंक्लूड करना है, ऐसे कौन सी योगा पोजेज है, कौन सी एक्सरसाइजेस है, ये सब आज हमने जाना डॉक्टर ग्रीष्मा से कि ये सब करने से, इन सबको इंक्लूड करने से हम किस तरीके से जो अपना वेट लॉस का जर्नी है उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं. सो ये था इस वीक के लिए. नेक्स्ट वीक एक और टॉपिक होगा, एक और हेल्थ एक्सपर्ट होंगे. सो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए एंड स्टे हेल्दी. बाय.